Hello students, hello, welcome back to your own channel. Hello students. Hello, welcome back to Junior Science Olympiad students. कैसे हो सब लोग? Students जल्दी से बताइए कि मेरी आवाज आ रही है सबको या मेरा वीडियो पीछे दिख रहा है तो जल्दी से thumbs up in the chat all of you. जल्दी से. Yes students, जल्दी से. Students, quickly tell me in the chat right now if I'm audible and visible to each and every one of you students. Hello. How was everyone doing students? Hello Aditya, hello Anita, hello Pro Gaming. Which game bro? Which game? So, hello students. Now, पिछले क्लास में हमारा पूरा का पूरा सेल चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है? So all of you right now have basic information about cell. सेल के बारे में आपको बहुत कुछ पता है अभी, ठीक है स्टूडेंट्स? Now, this is a very special chapter because from this chapter onwards, इस चैप्टर से ना आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. इस चैप्टर के बाद you will learn biology in a better way students and you will find a lot of answers which you did not know before. Okay students, with that same energy, can we start right now students? Can we start all of you? Now students, how many of you like to play games on the outside? How many of you love playing games on the outside? बाहर जाके खेलना, कूदना, गिरना, कितने लोगों को अच्छा लगता है? बताइए, बताइए. Students, because when I was a kid, I used to keep playing outside. अगर मैं घर के बाहर जाऊंगा ना, शायद से 9 बजे बाहर निकलता था, घर के शाम के 5 बजे वापस आता मैं, ठीक है? बाहर जाता, खेलता, बहुत खेलते रहता था और घर आते आते शायद से शाम के 5-6 बजे बच जाते थे, ठीक है? और मैं बहुत बार रेडी फुटबॉल, अमेजिंग. सो मैं बहुत बार गिरता भी था मैं खेलते समय, ठीक है स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व दैट, यू नो, दैट व्हेन यू गेट अ स्मॉल कट ऑन योर हैंड, ये स्मॉल कट बहुत टाइम के बाद बढ़ते हील हो जाएगा. हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व लाइक एक स्मॉल कट हो जाएगा शायद से और थोड़े दिन के बाद लेट्स से एक वीक के बाद पूरा का पूरा हील हो जाएगा. बट व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट? हाउ डज इट हैपन स्टूडेंट्स? हाउ डज इट हैपन दैट वन स्मॉल कट, हाउ इज द टिश्यू बीइंग रिपेयर्ड स्टूडेंट्स? हाउ इज द टिश्यूज इन योर स्किन इज बीइंग रिपेयर्ड? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड द हीलिंग? नाउ स्टूडेंट्स, do you think this happens in the case of non-living things? शायद से लेट्स से अगर मैं इस पेपर को ना, सोचो मैं अगर इस पेपर को मैं इस तरह से कट कर दूंगा, will the paper grow back now? Tell me students in the chat, tell me yes or no in the chat. क्या ये पेपर और एक बार पूरा का पूरा बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना. So this phenomena right now, can I tell it is exclusive to your living beings? Tell me yes or no students, tell me yes or no in the chat. It will happen broken fracture also. So students, if you take one non-living thing, okay, if I pluck out the hand, no arm replacement guarantee, it will never heal. ये heal नहीं हो पाएगा. So this exact phenomena is exclusive to your animals. Students, how many of you observed this? अगर एक lizard का ना tail cut करने से और tail वापस grow करेगा. How many of you know students? How many of you notice that? How many of you notice students? Play games students, it's fine. Play some games, it's fine. It is fun to go out. गिरने से ही मजा आता है. If you don't fall, what is the fun? There is a fun in falling down also, students. Now, you might have noticed, students, अगर एक lizard का tail को कट करने से ना पूरा का पूरा tail वापस बढ़ जाता है. It'll grow back, students. You might have noticed that also. Students, let me ask all of you one simple question. Which is the first cell in the human body? The first cell. See, right now we are trillions of cells. हमारे body में trillions of cells हैं. पर इस सारे के सारे trillions of cells में the पहला cell कौन सा था? The first OG cell. Students, which is the OG cell? The first OG cell is nothing but the zygote. It is nothing but the zygote, students. The first OG cell in our body is going to be the zygote. एक zygote से पूरा का पूरा इंसान बनता है. Like एक zygote से ना वो divide होते we get the entire fetus. ये एक fetus उसके बाद बड़ा, it'll go to school, it'll go to college, it'll go everywhere. Okay, so the first cell in the human body is zygote. Now the question to all of us is, सिर्फ एक zygote से ना इतना बड़ा organism किस तरह से बनता है? What is the secret behind the growth, students? Can anyone tell me in the chat? Can anyone tell me, students, what is the secret behind that one single zygote? एक चुटकी का zygote, ठीक है? एक single zygote बड़ा होके divide करके एक बड़ा organism बना रहा है. The secret is nothing but, students, the secret is what, students? The secret is class today 30 minutes class today. Today's basics, okay? So the secret behind is cell division. The secret behind is
cell division. The cell division is the secret here. Cell division is the secret here, students. Secret here. That is one small puppy. Students, Rottweiler puppy. This one small puppy is growing into an adult here. How? Because of cell division. If there is no cell division, there is no growth. Absolutely no growth. अगर cell division नहीं होता ना, इतना बड़ा सा इंसान कभी बन ही नहीं सकते हम लोग. So this entire growth is because of cell division. It is because of cell division, students. So what is exactly happening? One single zygote is developing into 3.6 trillions of cells. The main recipe behind is cell division, students. Students, even I love dogs. I have a dog in my house. Okay, I have a black color lab in my house. His name is Cash. My dog's name is Cash. Okay, so this entire cell division, what happens? Cell will grow. It will reproduce. That is, from one cell, students, all of you in the chat, from one single cell, it is dividing into two cells. One cell is dividing into two cells. That is, the cell is growing and eventually the cell reproduces. Reproduction of a cell. So can I tell cell division is cell reproduction? Tell me yes or no, students, in the chat. Tell me yes or no in the chat, students. The cell division is actually cell reproduction. The cell is reproducing into two. Tell me yes or no, students. Tell me yes or no. Students, tell me yes or no, students. One cell is dividing into two cells. That is basically cell reproduction. Yes, cell reproduction, students. Now, before we start today's class, I want all of you to understand a few terminologies. अगर आपको ये सारे के सारे वर्ड्स पता चल गया ना, इसका मीनिंग पता चल गया ना, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा. बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्लॉइड. हैप्लॉइड का मतलब क्या है, समझिए. हैप्लॉइड मींस सेल और ऑर्गेनिज्म दैट हैज सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. इस सेल के अंदर या इस ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है. स्टूडेंट्स, टेल मी इन द चैट राइट नाउ, आर वी डिप्लॉइड और हैप्लॉइड? जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, आर वी डिप्लॉइड और आर वी हैप्लॉइड? Quick in the chat, all of you. I want everyone to participate. Students, I want everyone to participate. Tell me in the chat, are we diploid or haploid? We are diploid in nature. That is, pair of chromosomes are present. So in our body, we humans are diploid in nature, students. We have 46 chromosomes in every cell. That is 23 pair. We have 23 pair of chromosomes. 23 pair of chromosomes in every cell. 23 pair of chromosomes in every cell. So 23 pair means what? It means diploid in nature. 2n. There's two set of chromosomes are there. So students, can anyone tell me what is the number of chromosomes in every cell? 23 pair means what? 23 pair means 46 chromosomes. So हमारे बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम है? हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है. स्टूडेंट्स, इतना क्लियर सबको? इतना क्लियर है क्या? हैप्लॉइड मतलब क्या है? हैप्लॉइड मतलब n. सिर्फ यहां पर 23 होते हैं इसके अंदर, पर यहां पर डिप्लॉइड माने 46. डिप्लॉइड माने 46. सो हमारे हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं. हम एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हम लोग. ठीक है स्टूडेंट्स. Yes, there is a 2 meter. I'll teach you, Aditya, I'll teach you how 2 meter long DNA. How 2 meter long DNA is present inside nucleus. 2 meter long DNA. 2 meter बहुत होता है 2 meter. ये पूरा को पूरा 2 meter DNA is present in one small nucleus. मतलब बहुत पैकेजिंग होगा वहां पर. That we will learn in another chapter. Okay, that we will learn in another chapter right now. So students, इतना समझ आया सबको? Haploid मतलब single set of chromosomes. Diploid मतलब 2 set of chromosomes. स्टूडेंट, मेरा कुत्ता भौंक रहा है अभी. ठीक है, कुत्ता भौंक रहा है स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, 1 मिनट, उसको थोड़ा खाना चाहिए शायद. 1 मिनट स्टूडेंट्स, 1 मिनट, उसको कुछ हो रहा है शायद से. बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं ना, और मेरा कुत्ता थोड़ा लाइक ही डजंट लाइक क्रैकर्स, ही डजंट लाइक साउंड. इट्स लाइक चुप हो जाके बोल रहा है सबको. स्टूडेंट्स, आई थिंक यू कैन हियर हिम. 1 मिनट स्टूडेंट, 1 मिनट. कैश, बहुत ही चुप हो गए स्टूडेंट. बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों आज बाहर. आई डोंट नो क्यों पटाखे फोड़ रहे हैं बाहर आज. कुछ है क्या आज स्टूडेंट्स? या ही इज ऑडिबल, इवन आई एम ऑडिबल आल्सो. ओके नाउ स्टूडेंट्स, तो इतना समझा सबको? हैप्लॉइड में डिप्लॉइड मतलब क्या है, समझा ना? नाउ समझो अभी. नेक्स्ट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन. क्रोमैटिन मतलब क्या है?
क्रोमैटिन इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर व्हाट इज इट इज मेड अप ऑफ डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या है, मैं आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ाऊंगा, मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ाऊंगा। पर अभी के लिए समझो कि एक क्रोमैटिन एक थ्रेड है, एक लंबा सा थ्रेड है, उस थ्रेड के अंदर डीएनए है, डीएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, उतना सब कुछ एक डीएनए के अंदर है। ठीक है स्टूडेंट्स ना, स्टूडेंट्स उसको मैं दूसरे दिन दिखाऊंगा, वो थोड़ा भी सो रहा है, बहुत पता नहीं कुछ हो गया उसको आज। ठीक है ना, क्रोमोसोम क्या है स्टूडेंट्स, अगर ये क्रोमैटिन पकड़ूंगा ना मैं, अगर इस क्रोमैटिन को पकड़ के मैं एक पूरा का पूरा एक बॉल बना दूंगा, इस क्रोमैटिन को पकड़ के मैं पूरा कंडेंस कर दूंगा, तब क्रोमोसोम बन के आएगा। तो एक क्रोमोसोम के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, एक क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारा क्रोमैटिन है। A chromosome is made up of students. A chromosome is made up of chromatin. अगर एक क्रोमैटिन को पकड़ के ना पूरा का पूरा एक बहुत कंप्रेस कर दूं मैं, पूरा का पूरा कंप्रेस कर दूं, तब क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, तब क्या बन जाएगा, एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम बन। स्टूडेंट्स आई नो वर्स्ट डे इन कश्मीर, आई सॉ स्टूडेंट्स समथिंग थिंग्स हैपन, राइट। तो यहां का पूरा हमारा क्रोमोसोम बन गया। एक क्रोमोसोम के स्टूडेंट्स, एक क्रोमोसोम है ना, अगर इस क्रोमोसोम के स्टूडेंट्स ये क्रोमैटिड, एक नंबर 1 क्रोमैटिड और ये दूसरा क्रोमैटिड है, दो क्रोमैटिड होते हैं यहां पर, इस दोनों को हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड करके कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। ये है हमारा क्रोमैटिड, क्रोमोसोम नहीं, ये पूरा का पूरा क्या है, क्रोमोसोम। ये दोनों क्या है, क्रोमैटिड। ये बीच का पार्ट क्या स्टूडेंट्स, बीच का पार्ट है सेंट्रोमियर, बीच का स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सेंट्रोमियर के साइड में क्या है, काइनेटोकोर है, इसके बगल में काइनेटोकोर यहां पर, ठीक है, काइनेटोकोर यहां पर, और इसी काइनेटोकोर के ऊपर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। तो इतना बेसिक इंफॉर्मेशन सबको समझ आया स्टूडेंट्स, इतना बेसिक इंफॉर्मेशन सबको समझ आया यार, नहीं जल्दी से बताइए। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स, अगर इतना समझ आया ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। एंड आई एम एक्सपर्ट एट दिस चैप्टर स्टूडेंट, बहुत बार पढ़ाया मैंने चैप्टर को, ठीक है, बहुत ही बार पढ़ाया मैंने चैप्टर को। सो ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एक सेल साइकिल के अंदर क्या है ना स्टूडेंट्स, आप सब लोग बताइए। साइकिल मतलब स्ट्रेट या सर्कल, जल्दी से बताइए। साइकिल मतलब ए लीनियर होता है क्या, एक सर्कल होता है। साइकिल मतलब क्या है, साइकिल मतलब इट इज सपोज्ड टू बी अ सर्कुलर थिंग, यहां से स्टार्ट होगा और यहीं पर एंड होगा। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, ऑलवेज साइकिल इज नथिंग बट इफ इट इज स्टार्टिंग एट वन पॉइंट, इट विल एंड एट द सेम पॉइंट। टेल मी यस और नो स्टूडेंट्स, टेल मी यस और नो स्टूडेंट्स इन द चैट। एक साइकिल के अंदर ना जहां पर स्टार्ट होता है वहीं पर एंड होता है। सो ये पूरा का पूरा चैप्टर इज कॉल्ड एज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे बताएं, पूरा का पूरा सेल साइकिल के बारे में बताएंगे, सेल साइकिल के बारे में, ठीक है। और एक सेल साइकिल के अंदर 3 मेन स्टेजेस होते हैं, 3 मेन स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज व्हाट, सेल ग्रोथ। सो इस साइकिल के अंदर ना, इस साइकिल के अंदर पहली बार सेल ग्रो करेगा, द सेल विल ग्रो फर्स्ट, ग्रो दैट इज इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म। यहां पर साइटोप्लाज्म बढ़ेगा यहां पर, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। स्टूडेंट्स मैं बहुत डिटेल में, trust me students, I will always go in detail, I don't leave anything aside, I always go in detail students, I always go in detail, ठीक है। यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर सेल साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहां पर क्या होगा, सेकंड स्टेप में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, दैट इज इंक्रीज इन डीएनए कंटेंट। यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन डीएनए कंटेंट, डीएनए कंटेंट डबल होगा यहां पर। बट what is the but here, the but here is number of chromosomes same to same होंगे। अगर सोचो यहां पर स्टूडेंट्स, यहां पर एक मिनट स्टूडेंट्स, यहां पर सोचो, यहां पर 2C है, शायद से 2C डीएनए, 2C will become 4C, but number of chromosomes will always remain the same. Here can you see here 46 chromosomes, यहां पर स्टूडेंट देखो, यहां पर अगर यहां पर 46 क्रोमोसोम्स है तो यहां पर भी 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। समझ आए स्टूडेंट्स, इतना पार्ट समझ आया सबको। तो डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है, समझो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। लेट्स से ये हमारा यहां पर एक क्रोमोसोम है, इस तरह से दिख रहा है, दिस राइट नाउ इज 2N2C, 2N2C, ठीक है, ये है हमारा 2N2C। अब क्या होगा पता है, यहां पर एक फेस आएगा कॉल्ड एस फेस। इस एस फेस में क्या होगा पता है, ये डीएनए ना यहां पर 2 क्रोमैटिड आ जाएंगे, यहां पर क्या आ जाएंगे, 2 क्रोमैटिड आ जाएंगे।
डीएनए कंटेंट है ना ये 2C, 2C will become 4C. DNA content is doubling. DNA content is doubling here. 2C will become 4C right now, but क्रोमोसोम नंबर यहां पर 2 है ना, और यहां पर भी 2n ही रहेगा. So in the DNA replication, what happens? In DNA replication stage, what is happening is the number of chromosomes will remain the same. Number of DNA content is doubling. But students यहां पर दो मेरे को बताओ आप, यहां पर है ना जो 46 क्रोमोसोम्स है, यहां पर जो 46 क्रोमोसोम्स है ना, 46 क्रोमोसोम्स, students, can anyone tell me how many chromatid do we have here? How many chromatid, students? How many chromatids do we have here? यहां पर कितने chromatids है स्टूडेंट्स, बताइए, जल्दी से बताइए. I'll tell you students, I'll tell you, don't worry. What is 2 and 2C? I'll tell you. This is where we get advance. यहां पर n मतलब क्या पता है? n मतलब the set of chromosome. We say n, 2n, 3n. n here is the set of chromosome. Set of chromosome. What set of chromosome? So 2n means what, students? 2n means what? 2n means there is a pair of chromosome here. 2n means two pair of chromosomes. So in the case of 2n always means diploid. 2n always means, students, what? Diploid. Can anyone tell me what is 3n then? What is 3n? Anyone, students, in the chat? Can anyone tell me what is 3n here? 3n is going to be what? Triploid in nature. 3n is going to be what? Triploid in nature. 3n is triploid. Okay. n means the number of set of chromosomes. n means what? Number of set of chromosomes, that is called as n here. Okay. Set of chromosomes. कितने set हैं हमारे पास? So we are what, students? We are 2n. We are diploid in nature. We have two pairs of homologous chromosomes. हमारे एक सेल के अंदर ना, there is always a pair of chromosomes present in our body. Every single chromosome has a partner here. See, तुम्हारे पास ऐसे किस तरह से एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना, तुम्हारे पास एक बेस्ट फ्रेंड है, उसी प्रकार से ना एक सेल के अंदर हर एक क्रोमोसोम का एक बेस्ट फ्रेंड है. समझा? हर एक क्रोमोसोम का एक बेस्ट फ्रेंड है यहां पर. सो एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन पेयर इन आवर बॉडी. एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन पेयर हियर. सो वी हैव 23 पेयर हियर. तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है पता है? इनिशियली क्या है हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है, पर हर एक क्रोमोसोम के पास सिर्फ एक ही क्रोमैटिड है, यहां पर एक ही क्रोमैटिड. सो यहां पर स्टूडेंट समझो, यहां पर इस क्रोमोसोम के ना 46 क्रोमोसोम्स के पास क्या पता है? 46, यहां पर 46 स्टूडेंट्स लिखने का नहीं हो, पता नहीं क्यों लिख नहीं पा रहा हूं. 46 क्रोमैटिड्स है यहां पर. सो हर एक क्रोमोसोम के पास सिर्फ एक ही क्रोमैटिड है यहां पर. बट आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा? आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन यहां पर कितने क्रोमोसोम्स हैं? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम. यहां पर क्रोमोसोम सिर्फ 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे, सेम. यहां पर 2n है, तो यहां पर भी 2n ही रहेगा. यहां पर 2n है और यहां पर भी 2n ही रहेगा. बट दैट डीएनए कंटेंट, since this is the one chromatid, one more chromatid, number of chromatids increase. If number of chromatid is increasing, DNA content is also increasing. तो अब यहां पर क्या होगा पता है? यहां पर 46 क्रोमोसोम के पास, स्टूडेंट्स, can anyone tell me how many chromatid will we have here? Here every single chromosome has one chromatid. Now here every single chromosome has two chromatid. Can anyone tell me in the chat right now how many chromatids do we find here? Think logically. All of you think logically and tell me. यहां पर हर एक क्रोमोसोम के पास एक ही एक क्रोमैटिड है, यहां पर एक ही क्रोमैटिड. This is before DNA replication. But after DNA replication, हर एक क्रोमोसोम के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम, 46, 2n. So can anyone tell me, students, यहां पर कितने क्रोमैटिड्स होंगे हर एक सेल के अंदर? This is inside one cell.
यहां पर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है और हर एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमैटिड है, पर यहां पर every chromosome right now has two chromatid. So can I tell 46 chromosomes into 2 can we do for chromatid? Friends, can we do into 2? Tell me yes or no in the chat. Students, tell me yes or no in the chat. यहां पर हर एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमैटिड है, तो कितने हो गए स्टूडेंट्स? कितने हो गए? सर दिस इज अ क्रोमैटिड, दिस इज एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज अ क्रोमैटिड. यहां पर एक क्रोमैटिड है और यहां पर दो क्रोमैटिड है, यहां पर दो क्रोमैटिड. सो बताइए स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 92 क्रोमैटिड्स हो जाएंगे यहां पर, 92 क्रोमैटिड. दैट इज व्हाई यहां पर 2C डीएनए कंटेंट है, 2C डीएनए कंटेंट, पर यहां पर डबल हो रहा है, 2C to 4C, 46 chromatid to 92 chromatid. Okay, 92 chromatid, 46 chromatid to 92 chromatid. Chromatid double हो रहे हैं यहां पर, इतना समझो आप. Okay, I will teach this you one more time. I will teach this one more time. This is a small introduction. Okay, now the last step is called as cell division. So एक cell cycle के ना last stage is called as cell division. यहां पर last stage is called as cell division. यहां पर स्टूडेंट समझो, यहां पर इतना काफी है. एक सेल साइकिल के पास पहला स्टेप है क्या? इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म. सेकंड स्टेप इज डीएनए रेप्लिकेशन. थर्ड स्टेप इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन. डीएनए रेप्लिकेशन में क्या स्टूडेंट्स? बताइए जल्दी से. C is the DNA content there. C is the DNA content. It's an arbitrary number. It is a arbitrary number which we say x we say right in maths. Like x का कुछ पता नहीं, but we try to find what is the x. So यहां पर भी C is DNA content here. DNA content for C. Okay. तो यहां पर क्या है? सेकंड स्टेप इज डीएनए रेप्लिकेशन. स्टूडेंट्स बताइए, स्टूडेंट जल्दी से. डीएनए रेप्लिकेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ रहे हैं क्या? जल्दी से बताइए. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ रहे हैं क्या? जल्दी से बताइए. नहीं बढ़ रहे. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल ऑलवेज रिमेन द सेम. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल ऑलवेज रिमेन द सेम स्टूडेंट्स. ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल ऑलवेज रिमेन द सेम, बट नंबर ऑफ क्रोमैटिड और नंबर ऑफ डीएनए कंटेंट इज इंक्रीजिंग. ओके, नंबर ऑफ क्रोमैटिड और नंबर of chromatid or DNA content is increasing. Chromosome is always same. Okay, students. Now, I told you, students, here is a small definition for all of you. The sequence of event by which a cell duplicates its genome. It is a sequence by which the cell duplicates its genome, DNA replication, synthesizes the other cell constituents. The other cell constituents like your endoplasmic reticulum, Golgi body, entire nucleus, everything is duplicating here, right? And eventually divide into two daughter cells. That is, एक सेल से ना, एक सेल से दो सेल बन रहे हैं यहां पर, एक सेल से दो सेल बन रहे हैं. That entire thing is called a cell cycle. Entire thing is called a cell cycle. Now, students, now we come to the main theory part, students. Okay, now understand, right? One cell cycle is divided into two parts. One entire cell cycle is divided into how many parts? Two parts. The first part is called as interphase right now. Interphase. The second part is called as what? M-phase. Second part is called as M-phase. So I want all of you to tell me in the chat right now. In interphase, the cell is preparing for cell division. It is what doing what, students? It is preparing for cell division right now. Now, students, tell me in the chat right now. All of you preparing for the exam now? Students, are all of you preparing for the exam? पढ़ रहे हो ना? अभी पढ़ रहे हो, prepare कर रहे हो. तो all of you right now are in which phase? So tell me in the chat right now. All of you right now is in which phase? Interphase or M phase? All of you right now are in interphase. That is, you are preparing for exam. You are preparing for exam. Now, this M phase is the phase where the actual cell division happens. The actual cell division happens here. This is like your exam day. यहाँ पर exam लिख रहे हो आप, ठीक है? Interphase is the preparing. All of you preparing for exam right now. ठीक है? तो interphase is the cell is preparing for cell division, and in M phase the cell division happens. Clear, all of you? Clear? Now, interphase has three phases now. Interphase has how many phases, students? Interphase के पास three phases है यहाँ पर. G1, S, G2. यहाँ पर G क्या है? G means gap. Gap 1. S means synthesis.
Okay, so G means gap, S means synthesis. So we have what? G1S, G2. After G1S, G2, M phase comes in. M phase comes, students. And M phase is again further divided into two parts. M phase is divided into chirokinesis and cytokinesis. Understand, students? Understand, all of you. The meaning of chiro. Chiro means what, students? Chiro means nucleus. Nucleus. So what happens in the case of chirokinesis? In the case of chirokinesis, kinesis means what? Division. Kinesis means division. So in the case of chirokinesis में क्या हो रहा है? Chirokinesis के अंदर nucleus divide कर रहा है पूरा का पूरा. Nucleus is dividing here. Okay, nucleus is dividing. ठीक है? और what is cytokinesis? Cyto means what? Cyto means cytoplasm. Kinesis means division. So cytokinesis में क्या हो रहा है? Cytoplasm divide कर रहा है यहां पर. समझे? All of you understood, students? All of you understood? So in chirokinesis, nucleus dividing, cytokinesis, cytoplasm is dividing. यहां पर एक chirokinesis के अंदर ना 4 स्टेज है यहां पर. कितने स्टेज, स्टूडेंट्स? 4 स्टेज है यहां पर. That is called as PMAT. P-M-A-T. PMAT. ठीक है स्टूडेंट्स? That's something called as PMAT here. What is P? P for prophase, M for metaphase, A for anaphase, T for telophase. So all of these are different stages where the cell is dividing. ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, समझा इतना? तो यहां पर कायरोकाइनेसिस के अंदर वी हैव PMAT. प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ये सारे के सारे स्टेज में क्या हो रहा है? ये सारे के सारे स्टेज में न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है यहां पर. देन साइटोकाइनेसिस इन द केस ऑफ प्लांट सेल डिफरेंट होता है और एनिमल सेल में डिफरेंट होता है यहां पर. स्टूडेंट्स, इतना सबको समझ आया क्या? सो दिस पार्ट वी विल स्टडी इन टुमारो नेक्स्ट क्लास. आज हमारा एम क्या है? आज हमारा एम है इसको पढ़ना, इतना पढ़ना. ठीक है? नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि एक साइकिल है यहां पर. मैंने आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा साइकिल है. बट इज इट लुकिंग लाइक अ साइकिल राइट नाउ स्टूडेंट्स? इज दिस लुकिंग लाइक अ साइकिल राइट नाउ? नहीं ना स्टूडेंट्स? बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में. इज दिस लुकिंग लाइक अ सेल साइकिल राइट नाउ? नहीं सेल मेरे को नहीं दिख रहा है. इट डजंट लुक लाइक अ सेल साइकिल फॉर मी. इट लुक्स लीनियर राइट नाउ. इट लुक्स लीनियर, राइट? इट लुक्स लीनियर. नाउ स्टूडेंट्स, शैल वी मेक इट इन सेल साइकिल राइट नाउ? इसको हम एक पूरा का पूरा सेल साइकिल दिखाएं हम लोग. दिखाते रुको. देखो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर सेल साइकिल. देख रहे हो यहां पर? दिख रहा है यहां पर देखो आप, यहां पर ये पूरा ब्लू दिख रहा है, ब्लू पार्ट. ये पूरा का पूरा ब्लू पार्ट क्या है? ये पूरा का पूरा ब्लू पार्ट है इंटरफेस. क्या है ये पूरा का पूरा ब्लू पार्ट? ये पूरा का पूरा ब्लू पार्ट है इंटरफेस. यहां पर इंटरफेस. सो यहां पर इंटरफेस में क्या है? G1S, G2. सो एक इंटरफेस में क्या है? हमारे G1S, G2 हमारे इंटरफेस का पार्ट है. और ये पूरा का पूरा ब्लैक पार्ट दिख रहा है, ब्लैक पार्ट. दिस ब्लैक पार्ट इज व्हाट? M phase. That is mitosis और M phase here. Mitosis और meiosis. ठीक है? और इस M phase में दिख रहा है ये पर्पल पार्ट. पर्पल पार्ट क्या है हमारा? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस. और ये पिंक पार्ट दिख रहा है पिंक कलर का, ये है हमारा साइटोकाइनेसिस. सो दिस एंटायर पार्ट इज M phase. दिस एंटायर ब्लू पार्ट इज गोना बी इंटरफेस. समझा स्टूडेंट्स? सबको समझा यहां पर? इंटरफेस G1S, G2, M phase is going to be PMAT and cytokinesis. स्टूडेंट, यहां पर हमारा है सेल साइकिल. यहां पर हमारा है सेल साइकिल. स्टूडेंट्स, सबको समझा? ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? टेल मी यस और नो स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? टेल मी यस और नो इन द चैट क्विकली. ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, एंड ऑल ऑफ यू क्विकली स्मैश द लाइक बटन. व्हाट इज दिस? क्विकली स्मैश द लाइक बटन राइट नाउ. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? सी, entire thing is called as interface. G1S, G2, M phase. M phase is further divided into this region is called as what? This region is called as your chirokinesis. Pink color part is called as cytokinesis. That is all is the entire cell cycle. Entire cell cycle, students. अर्थ आया था? Exactly. Entire thing is called as cell cycle. Now students, looking at the entire cell cycle, can you tell me in which phase is the cell most of the time? Is the cell most of the time in interphase or in M phase? Where do the cell spend most of its time? Tell me in the chat. Big idea. So tell me in the chat quickly. In which phase does the cell cycle spends most of its time? Quickly students, quickly in the chat. Tell me in the chat quickly students, all of you. Aditya, all of you. Ashwik, Haricharan, Anita, quickly students, quickly in the chat.
सी स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू ऑल ऑफ यू राइट डाउन इन इंटरफेस। आप एक एग्जाम के लिए ना पूरा साल पढ़ोगे, उसके बाद एग्जाम एक ही दिन होता है, और एक दिन में आप एग्जाम लिख के आ जाओगे, ठीक है। तो यहां पर भी एक सेल भी क्या कर रहा है पता है, पूरा का पूरा टाइम प्रिपेयर कर रहा है और एग्जाम दे रहा है, यहां पर एग्जाम दे रहा है। अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स। नाउ हाउ लॉन्ग द सेल साइकिल टेक्स प्लेस, कितना टाइम लगता है सेल साइकिल कंप्लीट होने में। एक सेल साइकिल कंप्लीट होने में ना एक बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ 20 मिनट्स, एक ईस्ट के अंदर 90 मिनट्स, और एक ह्यूमन सेल के अंदर 24 आवर्स लगते हैं। सो एक सेल साइकिल होने में ना, एक सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। किसमें? 24 आवर्स लगते हैं एक ह्यूमन सेल के अंदर, 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो एक सेल साइकिल कंप्लीट होने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, यहां पर 24 आवर्स। इतना समझा सबको? इतना समझ आया ना? ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन क्या है पता है, अभी क्वेश्चन है कि इस 24 आवर्स में ना, इस 24 आवर्स में एक सेल, इस 24 आवर्स में स्टूडेंट्स, इस 24 आवर्स में एक सेल कितना देर तक इंटरफेस में है और कितना देर तक एम फेस में। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डज द सेल इन दिस 24 आवर्स इज इन इंटरफेस इन एम फेस। अंडरस्टैंड इस इंटरफेस में ना, इस ह्यूमन सेल 23 आवर्स स्टूडेंट्स, 23 आवर्स। एक 24 आवर्स में ना 23 आवर्स हमारा पूरा का पूरा सेल इंटरफेस में, दैट इज अराउंड 95% ऑफ टाइम, 95% ऑफ टाइम द सेल इज इन इंटरफेस हियर, preparing full out of what it wants, and just 1 hour, that is just the 5% of it is in M phase. Students, इतना समझ आया कि नहीं? जल्दी से बताइए चैट कमेंट्स में, इतना समझ आया कि नहीं? जल्दी से बताइए। एक सेल ना 24 आवर्स में 23 आवर्स इंटरफेस में है और सिर्फ एक ही आवर ना एम फेस में, यहां पर एक ही आवर एम फेस में, दैट इज 5% ऑफ इट, 95% इंटरफेस, 95% इंटरफेस स्टूडेंट्स, ठीक है। Now students, I will give you a entire picture what is happening here. एक साइकिल किस तरह से बनता है यहां पर, ठीक है। What is the cycle here? The first phase what? G1, उसके बाद S, उसके बाद G2, उसके बाद M. Students, उसके बाद क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइए। उसके बाद क्या आएगा? Again G1, S, G2, उसके बाद क्या आएगा? Again M आएगा, G1, S, G2, उसके बाद क्या आएगा? और एक बार M आएगा। तो इस तरह से साइकिल होते रहता है, ठीक है। ठीक है, G1 S G2 M, G1 S G2 M, G1 S G2 M, इस तरह से साइकिल होते रहता है, कंप्लीट साइकिल। दिस इज कॉल्ड एज सेल साइकिल, फॉर ऑल ऑफ यू। G1 S G2 M, G1 S G2 M, ठीक है। Now students, we will in today's class is very simple. In today's class we will learn only about interface and then I will send you, ठीक है, deal? All of you deal students? In today's class I will teach you only and only cell cycle, the basics, then you can all of you go. Clear? उतना ठीक है students? उतना clear है? Now we will learn only this much today. I'll teach you what is G0, don't worry, okay. Now the first phase is called as G1. G1 phase is also called as gap 1 phase. It is also called as gap 1. First growth phase, post mitotic phase. You might be wondering students, why am I calling it post mitotic? Because students, समझिए, G1 here, it is happening after M. G1 is happening after M. Post means what? Post means after. So it is called as what? It is called as post mitotic. It means it is happening, G1 phase is happening after M phase. Tell me yes or no students, tell me yes or no students, tell me yes or no. It is happening after M phase, okay. It is post mitotic, it is happening, G1 is happening where? G1 is happening post mitotic. After mitotic we have G1, okay, we have G1 here, we have G1 phase. What exactly happens here? It occurs between M and S. It occurs between
M and S. So between M and S here, between M and S, we have the G1 here. Okay, G1 is present, M and S. Okay, longest phase, metabolically active. This is very important line here, very important line. Metabolically active and continuously grow, but does not replicate DNA. Friends, if I ask you a question right now, does the DNA replication happens in G1? Tell me yes or no. True or false? Does the DNA replicate in G1? True or false? False. In the case of your G1, there is no DNA replication. DNA replication नहीं होता G1 के अंदर, नहीं होता, DNA replication नहीं होता. ठीक है, इतना points clear है सबको? Students, this is the points about G1 or gap 1. Now we come to S phase, students. Now we come to S phase here. S phase में क्या हो रहा है? S phase के अंदर ना three things are happening mainly. Three things. You should know, remember three things here. DNA replication happens in the S phase. That is 2C to 4C it is converting. पहले बताया था ना आपको, मैंने पहले बताया था ना, यहां पर 2C, that is 46 chromosomes, 46 chromatid. Students, 46 chromosomes, 46 chromatid. It is converting into what, students? Can anyone tell me? 46 chromosomes and 46 chromatid. It is converting into 46 chromosomes, but 92 chromatid. 92 chromatid. ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? 46 chromosomes, 46 chromatid to 46 chromosomes, but 92 chromatid. It is converting into 92 chromatid right now. 92 chromatid right now. Clear, all of you students? Clear? 92 chromatid is getting converted to 92 chromatid here. That is, DNA replication is happening in the case of S phase here. Now, at the same time, this happens inside the nucleus. This happens inside the nucleus. It happens inside the nucleus right now. But centrioles duplicate in the cytoplasm also here. Now, no change in chromosome number. The chromosome number will remain the same. 46 to 46. Chromosome number is not changing here. Centrioles duplicate in the cytoplasm. No change in the chromosome number. DNA replication is happening in the case of S phase. Clear? Now, what exactly happens in the case of G2? In the case of G2, it is second growth phase. It is pre-mitotic phase. Why, students? Why? G2 is happening before the mitosis. This M is mitosis, right? M is, we can say, mitosis. This G2 is happening before the mitosis, pre-mitosis. Okay, so G2 is happening. It is also called as what? Pre-mitosis growth phase. Duplication of mitochondria in chloroplast, RNA synthesis and protein synthesis. These are the three main points about G2 or gap 2. Clear, students? Clear, all of you? This is your entire cell cycle. Students. Now what happens? You understand, students. Now understand what happens now. Now, some cells, okay, for example, they will, like, I can't do this anymore. Some cells, because of lack of nutrients, they will exit the cell cycle. See, students, all of you preparing for Junior Science Olympiad or any competitive exams, in this long race, is there some students who will leave the race? Some students will give up in the end. Tell me yes or no, students. Tell me yes or no. Some of the students will give up in the end. They're like, मेरे से बस का नहीं है ये. I cannot do this anymore. मेरा बस का नहीं है. Right? Here also, in this cell cycle, there are some cells which will exit the cell cycle. Why? Because of lack of nutrients. Some cells exit. Okay. Now, some cells in adult animals do not appear to exhibit cell division. They will not do cell division. Example is heart cell and nerve cell. Heart cell, nerve cell, and even red blood cell also. All of you should be knowing that red blood cell does not replicate. I'm not talking about G0. I'm not talking about G0 now. I am talking about your RBC. It doesn't replicate. RBC doesn't replicate. Remember that concept also. That was my other question which I was supposed to ask. I told the answer, students. Red blood cells does not replicate. Okay. Now, many other cells divide only occasionally as there is need to replace cells that have been lost because of injury or cell death. Now, students, आप ही बताओ, is it always required that cells have to keep on dividing? No.
cells will only divide when is the requirement. Students, you tell me in the chat, do you always keep on eating? हमेशा खाते रहते हो क्या आप? नहीं. Whenever you feel hungry, you eat. Whenever there is a need, the cell divides. Whenever there is a need, the cell is dividing. Okay. So see, understand this. Many other cells divide only occasionally as needed to replace the cells that have been lost because of injury or cell death. When the cell is let's say some cells are injured, to replace that cell, this cell will divide. Some cell is dying, to replace the dying cell, this cell will divide. So whenever there is a requirement, जब requirement है तब cell divide करेगा. उतना ही concept है यहाँ पर, उतना ही concept है, ठीक है? These cells do not divide further. They exit after G1. स्टूडेंट समझो यहां पर, ये सेल साइकिल में ना, ये सेल्स कहां पर एग्जिट करेंगे? ये सारे के सारे सेल्स जीवन स्टेज के बाद बाहर निकल जाएंगे सही. सो आफ्टर G1 they will exit students. They do not divide. No, some cells divide, some cells they exit the cell cycle. Okay, that is called G0. They don't want to divide. Okay, some cells do not divide. Okay, appear exhibit cell division. Example, heart cell doesn't divide also. Heart cell doesn't divide. Okay, so they do not divide further. They exit G1 phase to enter an inactive stage called as quiescent stage or G0 stage, students. So some cells, they exit the cell cycle. After which stage, students? After G1 they exit and they reach a quiet stage called as quiescent stage, also called as G0 phase. Okay, but G0 of the cell cycle, cells, very important, most important line of NCERT here. Cells in this stage remain metabolically active. So are they completely inactive? No, they are metabolically active here. It means they are undergoing metabolism here. So metabolically active but no longer proliferate. It means that they are active right now. But they do not divide. Clear all of you, students? Is that clear to all of you? Students? Okay. Now, a small homework for all of you, students. I want all of you to go today and find out which cells do not divide in the human body. All of you will do, students. All of you will do that. All of you will do, students. Do that. You need to make a list of cells in the human body which enter G0 or which do not divide. That is your homework for all of you, students. That is your homework for all of you. Okay. That is your homework for today. Okay, students. करोगे ना homework और ऐसे आ जाओगे. Students, whenever I tell you something, right, it will bring out curiosity in your mind. You will bring out curiosity. So go and try and finding out which cells do not divide. Okay, which cells do not divide, students. Okay. Now here, are they active here? Yes, they are active. They are metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so. So depending upon the requirement of the organism, they will start to divide again. But if there is no requirement, they will not divide. Again, they will not divide. Okay, students, इतना आपका homework है. ठीक है? Now, students. Some cells are temporarily in G0. Some cells are permanent in G0. See, nerve cell, nerve divide, right? Heart cells, they're permanent in G0. Permanent in G0, students. Okay. Now, before we go to the last concept, one more concept here. In animals, mitotic cell division. This I'll teach you later. Students. This is now, you should know university for this. Now, a question to all of you, students. Students, a question to all of you, students. Let's see who can tell the answer. A question to all of you. Can you think of a cell that never enters G0? Can you think of a cell that does not enter G0 at all? Anyone? Answer is meristematic cell. The answer is meristematic cell, students. Meristematic cell. Meristematic cell that never enters G0. That never enters G0 at all. Meristematic cell, students. Meristematic cell never enters G0. Now, students. Now here also there is something called checkpoints. There are something called as checkpoints here. हर एक स्टेज के बाद ना एक चेक पॉइंट है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ चेक पॉइंट कॉल्ड एज G1S चेक पॉइंट और G1 चेक पॉइंट. इस चेक पॉइंट पे क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स चेक करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स, डीएनए डैमेज.
अगर किसी प्रकार का DNA डैमेज है ना, it'll never go to the next stage. It'll stop here only. So it'll make sure all the nutrients are there for cell division, all the nutrients are there, growth factors are there, DNA damage is not there. Now, second checkpoint is called as G2 checkpoint or G2M checkpoint. यहाँ पर होता है. That is called as, it'll check for अगर cell size बड़ा है क्या, to go to M phase. Is DNA replication proper to go to the M phase? Because this is happening after DNA replication. ना DNA replication यहाँ पर होता है. This is called as G2 checkpoint. It is happening after your G2 here, G2 checkpoint. There is one more inside the M also called as metaphase checkpoint, which I'll teach you later on. Here they check chromosome spindle attachment. They check here chromosome spindle attachment. This I will teach you when I'm teaching you about mitosis. Okay, so यहाँ पर checkpoints है G1S checkpoint, G2H checkpoint. Like होता है ना checkpoint to check everything is proper or not. तो next stage में जाने से पहले, next stage से जाने से पहले यहाँ पर checkpoint होते हैं. Now students, so this you will learn in the next class. This you will learn in the next class, students. Now, students, shall we do some rapid fire questions? Students, shall we do some rapid fire questions? Students, shall we do some rapid fire questions now? Students, shall we do some rapid fire questions now? Do you want to do NEET questions? Do you want to do NEET level questions? NEET level question, do you want to do, students? NEET level question? Okay. Students, first question on the board. Let's see who can tell. First question on the board. It's a rapid fire. Quick answer, quick answers. Centrioles undergo duplication during. When do centrioles duplicate, students? Centrioles duplicate in S phase. All of you remember? Centrioles duplicate in the S phase here. All of you remember, right? Centrioles duplicate in the S phase of the cell cycle. Centrioles as well as DNA replication. Next question on the board. G1 phase of the cell is metabolically active, right? And continuously grow, but does not replicate DNA. There is no DNA replication. There is no DNA replication G1. G2. Protein are synthesized here and preparation for mitosis while cell growth continues. See, G2 protein synthesis, G1 metabolically active, no DNA replication. Both are correct here. Both are correct, students. Both are correct here. Next question. This is a NEET 2024 question. Means last year. This is last year question. Okay. Following are the stages of cell cycle. Okay. So students, what is the first one? First is G1. Then we have S, synthesis. So ECADB, students. Gap 1, synthesis. Gap 2, chirocyto. Yes. ECADB, students. This is a NEET 2024 question. This question again. This is also a NEET PYQ. G1, students, tell me in the chat. G1 is what? Metabolically active and grows continuously. Okay, A is 4. S phase, replication of DNA. S is 2. S is 2, students. S is 2. Okay. C is going to be 1. Cell is metabolically active but no proliferation until requirement, no cell division. So C is 1. So we got the answer. They only got the answer, students. They only we got the answer. D is 3, students. Such an easy question. Option number 2 is right answer here. Next question. Among eukaryotes, replication of DNA takes place in. This is a NEET 2023 year question. NEET 2023 question, students. NEET 2023 question. Where does the replication of DNA takes place? It happens in the S phase. Happens in the S phase here, students. Next question on the board. During G0 phase of cell cycle, the cell is metabolically active. Yes. Centrosomes undergo duplication during S phase of interphase. Yes. Both are correct here. Again, both are correct here. Okay. Centrosomes duplicate under S phase of cell cycle. During G0 phase of cell cycle, cell is metabolically inactive. Cell is metabolically inactive. Okay. So this is incorrect. This is incorrect here. It is metabolically active, right? The cell is metabolically active. So this becomes incorrect here. This becomes incorrect here. Okay. Now, which of the following is quiescent stage? That is G0. Quiescent is G0. 23 question. This is a NEET 2023 question. Next question. Students, I hope it is visible to all of you. If it is not visible, I'll read for you. A fruit fly has 8 chromosomes. Students, a fruit fly has 8 chromosomes here. A fruit fly
has 8 chromosomes. 8 chromosomes. Okay. 8 chromosomes, that is 2n in nature. 2n is 8 here. Okay. During the interphase, this is there in the interphase. This is present in interphase. Present in interphase. Okay. Now, if the number of chromosomes in G1 is 8, now number of chromosomes in G1, is 8, they're asking you what would be number of chromosomes after S? What would be the number of chromosomes in S? Friends, what is the answer? If number of chromosomes in G1 is 8, number of chromosomes in S also it will be 8 only. Why? Because number of chromosomes do not change. Number of chromosomes will remain the same always. Number of chromosomes do not change. Friends. Some cells exit cell cycle and enter vegetative phase in act called G0, quiescent stage. This process occurs at the end of. When do cells enter G0? After G1. So after G1, they enter G0. This is a NEET 2020 question. This is your homework question. This is your homework question. This right here, students, is your homework question which I want in the comments. Homework question. This is a NEET 2019 question. The correct sequence of phase in cell cycle is NEET 2019 question, students. So students, with the help of this, all of you understood the basics. Yes, you understood the basics. All of you were able to enjoy. Concept is getting, students. Again, you can't by heart this. You cannot by heart this. This is a concept, purely concept. Okay, students. So thank you so much, students, for today's class. I will see you in the next class, students. Take care. Until then, keep studying. Have fun. Understand biology. Don't by heart biology. And imagine all of this is happening in your cell right now. It might be happening in your body right now. You never know. So try to imagine if it is actually happening in your body right now. G1S, G2M in your body right now, students. Okay. So students, thank you so much for today's class. Baba, NEET is easy. It is not, because you will understand more NEET level questions when I teach you difficult concepts. Okay. But if you students, let me tell you again. Whenever I teach you a concept, I make sure you will be able to solve every question. So again, right, NEET is easy, but the time is not there. That is the main thing there. Okay. So thank you so much, students. Bye bye. Take care, all of you, and I will see you next class. Until then, keep studying, keep working hard. Bye bye. Take care, all of you, students. Bye bye. Let me know in the comment section how was the class, students. Let me know in the comment section how was the class. Oops. What is happening? Attack is happening, students. Attack is happening. So students, biology NCERT is more than enough, students. Biology NCERT is more than enough. You don't have to worry about anything else. If you do not want NCERT, you can also go for MTG. But students, let me tell you the best books actually. The best books, let me tell you, students, from my side, from which I prefer, is actually, right, there is something called as Tattva book. Students, are you aware of Tattva book? If you buy the Tattva book, it is Vedantu book itself. It has been made with so much of effort, right? I have the books. I'll show you next time. A Tattva book has almost all possible information which a student needs. Every single piece of information is in Tattva book. So if you buy a Tattva book, it is very enough. Okay, students. I will show you next class why Tattva book is the best actually. Okay. Students, thank you so much for today's class. Until then, students, take care, all of you. Take care. So, bye bye, students. Take care, all of you. Ebook is there. Yes, ebook is also there. Tejas ka